बचपन में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहता था, फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था कि फॉरेस्ट रेंजर लोग शेर वगैरह के बच्चों के साथ खेल सकते थे। बचपन में हो या आगे जिंदगी में हो, हम किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी ना किसी को एक इंस्पिरेशन मानते हैं एंड इंस्पायर भी होते हैं। एंड हम उस इन्फ्लुएंस से या उस इंस्पिरेशन से हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं या अचीव कर पाते हैं। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे एंड किससे इन्फ्लुएंस्ड थे वो बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपका आज के डेट में इंस्पिरेशन कौन है। आपके काम में हो सकता है, आपके हॉबी में हो सकता है, आपका मर्जी, बट ये कमेंट जरूर करना। ये दोनों क्वेश्चन आंसर करना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है ना। बचपन में जो आपका इंटरेस्ट था, आप आज बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, बट बचपन में आप क्या बनना चाहते थे एंड आपका इन्फ्लुएंस क्यों और कौन था, जरूरी है। ओके, ये वीडियो एक ट्रिब्यूट भी है एंड एक कहानी है इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन का। जैसे आप सब जानते हैं, हाल ही में मैं अमेरिका में था, ह्यूस्टन में था, एक्वेरियम डिजाइन ग्रुप में था एंड मेरा एक इंस्पिरेशन मिस्टर जेफ सेंस्के, उनसे मैं बातचीत कर रहा था एंड उनसे मैंने यही 2 क्वेश्चन पूछा एंड ये वीडियो में आप देख पाओगे कि उनका आंसर क्या था, उनका रिस्पॉन्स क्या था। सो चलो फटाफट वीडियो में जाते हैं, देखते हैं कि जेफ क्या सोचते हैं। ये वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत यूनिक है, इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है, या फिर एक कॉन्वर्सेशन है। मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखो और इसमें से आप अपने लिए बेनिफिट या यूजफुल पॉइंट्स ले लो। जेफ से एक मैसेज आया है आप सब के लिए कि वो बहुत ही खुश थे हमारे विजिट से एंड उनके साथ हमारा पहला वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। सो वो भी उनको अच्छा लगा। सो ही इज थैंकिंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम अमेरिका टू ऑल ऑफ इंडिया। जेफ, आपका इंस्पिरेशन कौन है? जेफ, आपको कौन इंस्पायर करता है? Definitely, Mr. Takashi Amano is absolutely the source of my involvement in aquarium design in any kind of way. When I first saw his Nature Aquarium World books, I'd been around aquariums my entire life, but this was a whole new experience, a whole new possibility, a transformation. I saw something that I didn't think was possible, and this was just such a big moment in my life, and right away I knew I must learn how to do this. And so over time that became really the guiding principle of my work. In other words, even if I was going to do a marine aquarium or an aquarium without aquatic plants, this idea of composition and purpose in the aquarium would now inform everything that I do. अब अमानो साहब की बात चली है तो the one thing आपने जो अमानो साहब से सीखा, what did you learn from him? Yes. What is it that you hold close to your heart? Right. So it was definitely meeting Mr. Amano in person the first time. It was 2001. So internet is still very new. Yes. There's no social media or this kinds of things yet. So it was just obviously a very important moment for me. So I had already been trying to take some photographs of my work. It's 2001, digital camera is new. They weren't very good, but they were enough to show him some work. This was Mr. Amano's first trip to the United States, and I approached him with these photographs of some of my first attempts at aquascaping. And so he's looking through them straight away. He didn't even need to give this a long thought, right? He says,
Well, Jeff, you've acquired the skill to grow the plants, but your layouts lack philosophy. And he explained what he meant by philosophy. In other words, I had too many different ideas in my head. And I had looked at every layout in his books and was putting too many different pieces from this one and that one, and as opposed to having a clear intention in terms of what is the layout I want to make. Is it going to be a shadow? Is it going to be very bright, high energy plants, red stem plants? Is it going to be a robust scene or a quiet scene? This sort of thing. And this just, this made the biggest impression on me. I still think about that every time I'm doing a new layout. This crosses my mind, that moment in that conversation. What's my intention? What's my philosophy? It was a very, very, very important moment. I guess he had something to give everyone. Amano साहब इंडिया में थे, and उनके ट्रिप में मुझे एक मौका मिला उनके साथ टाइम बिताने का. And I had so many questions, you know, too many questions. Why is this? Why is that? Why is this? And why is that? And he gave me one answer. Calm down and think about it, and think what happens in nature. That's all. He just, every time I ask him a question, he'd say, what happens in nature? Right. Okay. Kudrat mein kya hota hai? And this is something that I've always been advocating to anyone that follows me as well. कि सोचो ना 2 मिनट कुदरत में क्या होता है. And Mr. Amano put it beautifully. He said, it's just not aquariums, it's whether your girlfriend, wife. Ask yourself what happens in nature. It kind of works beautifully. Yeah. So, you know, I mean, this is, I think, a little bit of a tribute from both of us to Mr. Amano, a great person, you know, and he's done so much for the hobby, and he's given direction to a lot of us. You know, thank you, Mr. Amano, thank you, wherever you are. Jeff, tell us something about your childhood. What was it, you know? Right. Aquariums and why? See, of course, you had your shop, your dad's shop, but why did you continue? Because it so happens sometimes the next generation, they become engineers or doctors and move out. Right, right. So for me, I not only had my dad was into it, but my older brother, who's now obviously my business partner in Aquarium Design Group, was even more passionate. I mean, he was really, really embraced all aspects of fish keeping very early on. So I have to be honest and say that it was really just it was a very natural progression. I was around it so much that I sort of couldn't not have an aquarium in my bedroom and this sort of thing. For many years though, it really wasn't a very like a big deal to me. I just thought that I liked looking at the fish in the water. I liked having a pet fish when I was very little. So it really, there wasn't this sort of, the specialness of it was a little lost on me because it was just so common in my experience. And so it was more a case of learning all about it just from being around it. And it became a very natural progression as sort of a career. And of course I tried other things, I dabbled in other things, but I would always come back to aquarium somehow. I could never, I couldn't get away from it. I agree with one way or another. I always came back. And fortunately, my brother Mike, he never stopped. He was 100%. So he was your driving force. Yes. In yes, sorts. Yeah. Yes. So see this, I'd love to tell you, I'm a 4th generation baker. I'm a chef by profession. I gave up everything and got into aquariums full time. So I think our stories are all the same. So, but every time in my bakery, I had an aquarium. In my restaurant, I had an aquarium. Right. So I guess, you know, it's all our stories are so connected. Sure. एक hobbies ना एक बिरादरी होता है. Hobbies, we're a brotherhood, you know, a camaraderie of sorts. Sure. You know, and because मैं ये कहता हूँ because मैं जब से पहली बार मिल रहा हूँ and मैं इनके शॉप में आते ही वो इतना एक warm welcome था उनका कि you know I'm so glad again. Thank you Jeff. Interesting बात था ना, and मजेदार भी बहुत था because मुझे लगा कि दुनिया में कहीं पे भी हो एक्वेरियम हॉबीइस्ट का एक बिरादरी होता है, एक ब्रदरहुड होता है. हम लोग सोचते सिमिलर है, करते चीजें सिमिलर है, एंड हम लोगों का लाइफ ना या लाइफस्टाइल सिमिलर हो जाता है. सो हम लोग एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं.
मैं जेफ से पहली बार मिल रहा था, बट मुझे लगा कि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं ना। इस ट्रिप के दौरान मुझे 2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग मौके मिले या चांसेस मिले। जेफ के साथ इंटरेक्शन के दौरान मुझे दिखा कि उनके एक गोल्डफिश एक्वेरियम में एक छोटा सा गोल्डफिश को स्विम ब्लैडर डिजीज हुआ था। मैंने हमारा जो न्यूट्रोप्लस था मेरे साथ था, एक्चुअली उनको दिखाने के लिए मैं लेके गया था, एंड मैंने उनको वो सैंपल दिया भी और उनको दिखाया भी कि कैसे न्यूट्रोप्लस या न्यूट्रोफिट प्लस कैसे यूज होता है गोल्डफिश के लिए। एंड अभी एक हफ्ते के ऊपर हुआ है, मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, इंडिया में हूँ, एंड उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो गोल्डफिश अभी ठीक होने लगा है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एंड मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है, हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा एक इंडिया का प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल है प्रोडक्ट, वहां पे अमेरिका में उनके लिए फायदेमंद हुआ और एक और फिश हैप्पी और हेल्थी हो गया। एक और मौका मिला कि मैं अपना लाइफ आयु का एक स्पेशली डिजाइंड मग मैं जेफ को एक तोहफे की तरह दे पाऊं, एंड प्लस उनको मैंने हमारा लाइफ आयु का फिश फूड सैंपल्स भी दिया कि वो ट्राई करे और हमें बताए कि उनको कैसे लगा। अगेन उनके मैसेज में ये भी था कि उनको फूड बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छा लगा उनको। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो एक छोटा सा वीडियो वगैरह बना के भेजे ताकि आपको भी पता चले कि सीनियर हॉबीज हमारे फूड के बारे में क्या सोचते हैं। ये वीडियो ना बहुत यूनिक है, बहुत इंस्पिरेशनल है, इसमें सीखने जैसी बातें बहुत सारे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें से आपने बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, ऑफ कोर्स मजा लिया। एंड मैं ये भी चाहता हूं कि आप किसी का इंस्पिरेशन बने या इन्फ्लुएंस बने, गुड इन्फ्लुएंस बने एंड गुड इंस्पिरेशन बने। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। ओके, सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। जेफ के साथ काफी सारे वीडियोस है। ग्रीनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो जेफ एडवोकेट करते हैं, उसके बारे में काफी सारे वीडियोस है, टैंक सेटअप वगैरह वगैरह है। नाउ लिंक्स ये वीडियो के आखिर में है, आप जरूर देखना, मजा लेना, कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है, आपको सीखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।